Okay, a very good morning to all. Uh, Hope I'm audible. If any voice issue or anything you are not going to see, because already I shared the presentation to everyone. So moving ahead with our next part of semester 4, or we can say that is the next part of mathematics, engineering mathematics 4. Already we had uh, engineering mathematics 3 100% syllabus we completed in the previous semester, and the examination was, we can say that is a online or MCQ and descriptive basis. I saw the answer paper or the PDF whatever you uploaded for the part 2, like question number 2 and question number 3, and uh, according to the review of your answer sheet or PDF, it was clearly seen that the paper pattern and the paper was very easy. It was not like your offline examination pattern, because offline examinations and online examinations both are totally different or completely different. But this time, that is engineering mathematics 4, might be the exam lectures are going on online, but the examination will be 99.99%, or I can say that is 100%, it will be offline based. So be careful about that. Don't think like the examination for SEM 3 was online, so SEM 4 is going to be again online or something. No way. So might be in the month of February. I'm not commenting or I'm not promising, but might be in the month of February, middle of Feb, or last week of Feb. The colleges must be physically on, or physically it will start. So you should aware about these things, and you should be ready whenever the college is going to be start, or going to again start physically things. So this semester must might be ऑनलाइन, मतलब हो सकता है आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स रह जाएं, लेकिन एग्जामिनेशन विल बी 100% offline based, like your same one examination point of view. So moving ahead with the next part, that is engineering mathematics 4. As when, if you aware about that is, many students belongs to my C division students when I was teaching applied mathematics 1, and I was sorry, engineering mathematics 1 and engineering mathematics 2. I always repeated, or I always told, that is amongst all mathematics or engineering mathematics, amongst all mathematics and engineering mathematics, the easiest mathematics is engineering mathematics 4, or we can say that is easiest easiest mathematics. Just a second. So the easiest mathematics is engineering mathematics 4, or we can say that is applied mathematics 4. So
So already I shared the screen. So the syllabus, I'm going to just explain this part. The syllabus of your engineering mathematics 4. Again, the same pattern. Test 1, like IIT 1 and IIT 2 will be 2020, and average of test 1 or IIT 1 and IIT 2 will be 20 marks. So let's see the examination, what kind of examination is going to happen in or for semester 4 or engineering mathematics 4. If there is offline, then you should come to college and attend like your engineering mathematics 1. And if there is online, so as earlier we had in semester 3, it could be a same kind, same things. So the syllabus is sorry, the examination pattern will be same like semester 3. Test 1, test 2, average of tests, and same examination must be 80 marks. Term work there is a 25 marks, practical, oral, no practical, no oral. So total 125 marks. So prerequisite required, that is engineering mathematics 1, 2, and 3, and binomial distributions. So moving ahead with your course objectives, if you see that is a course objectives, matrix algebra to understand engineering problems. The first course objective is, because this part belongs to linear algebra, or we can say that is a matrices. Second one is a line and contour integrals and expansion of a complex valued function in a power series. So this is your second objective, course objective. You must learn these things. You must understand these things. Third part is Z transform and inverse Z transform with its properties. As already I told in semester 3, if you aware, there was a Laplace transform. During Laplace transform, while teaching of Laplace transform, I always told that when a periodic function have to convert time domain to frequency domain, we required we re, we required Laplace transform. But when a periodic function we have to convert, a periodic we have to convert, we must require, just a second. So the next one will become the concept of probability distribution and sampling theory for small problems or small samples, we can say that, because your syllabus is designed for some uh, small range kind, not like a big range, because there is a testing things, or there is a topic belongs to known as the sampling theory. Small sample, large sample, linear and non-linear programming problems. This is a very important part. Linear and non-linear programming problems. Optimization. This is a very important part for linear and non, because when you will enter in semester, then is again we can say that is a institute level subjects as well as a university level subjects. In that subject, the main part is linear and non-linear programming problems. Now moving ahead with what we will get course outcomes and all. So these things you have to learn and what you will get. मतलब आपको outcomes क्या आ रहा है? So outcomes will be apply the concept of eigenvalues and eigenvectors in the engineering problems. So there is a might be of engineering problems or engineering part. You should solve the problems of matrices by using your concept of engineering mathematics.
Use the concept of complex integration for evaluating integrals, computing residues, and evaluate various contour integral. What is a residue? As already I explained during semester 3, the residue is what basically residue is we can or we always use a Wi-Fi at our house, or we are while playing a games, we always use the concept of residue. Residue means region of convergence. Basically, residues, the application of residue is a region of convergence or limiting in a circular way. मतलब एक सर्कुलर में एक रेंज में पर्टिकुलर में क्या क्या आप कर सकते हो, दैट थिंग्स आर बिलोंग्स टू a residue things. Or apply the concept of Z transform and inverse in engineering problem. As I already mentioned, that is when we have to transform a periodic functions while time domain to frequency or frequency to time, we always require a Z transform. Use the concept of probability distribution and sampling theory. This is a basic things. The probability and sampling theory, it is our day-to-day life problems, day-to-day life conceptual things, as well as this part belongs to any kind of engineering like IT, computer, electronics, mechanical, whatever. कोई भी इंजीनियरिंग है, कोई भी तुम्हारा कॉमर्स फील्ड है, आर्ट्स फील्ड है, कोई भी फील्ड है, this part is belongs to all kind of work. Means probability and sampling theory. Whenever we have to research anything, we always require data. Whenever we have to think for any work, we always require data, we always require history. So sampling theory is a very important part, or probability is a very important part, because these things required to get the best estimations or to get the best things whatever what we have to do for any objects or any work. Now apply the concept of linear programming problems to optimizations. So this is a optimization concept. And one more thing, that is a non-linear. If linear programming is there, then non-linear programming is always present. Similarly, if I say that is a large sample, then by default you should learn about the small sample. So these are the course outcomes you will understand. Now the syllabus, if you see, very simple and sweet syllabus. The first one is a linear algebra, that is a theory of matrices. You can see that is three parts: characteristic equations, Cayley-Hamilton theorem, similarity of matrices, self-learning topics, derogatory, non-derogatory, function of square matrix, linear transformation, quadratic form. Now module 2, if you see, that is we'll start from module 2, complex integrations. The next part is application of residue theorem to evaluate, and all the things belongs to self-learning. Taylor's Lorentz series, definition of singularity, zeros, residue, and all the things we should have to learn. So you can see that is hours, 6 hours, 7 hours. Model for Z transform. Here you can see that is a Z transform. So this is part belongs to Z transform. Again, it is for 5 hours. Probability distribution and sampling theory. So this again 6 hours module, and last one is, sorry, second last one is a linear programming problems. Again, it is a 6 hours, and second last sorry, last one is a non-linear programming problem. So it is again 6 hours. So whatever the self-learning topics are given, or whatever the self-learning topics are there, you should go with these topics for a mini project. As already we had in a SEM 3, you should go ahead with your self-learning topic for your mini project. So this is your syllabus. If you want to refer for a books or something, you can see that is there are a lot of books. Already I shared these things on SEM 3 classrooms. Even I will share this part also at SEM 4 classroom also. So you can go ahead with whatever the textbooks or the reference books required,
and the best book already I already you aware about this, that is a Kumbhojkar. So the Kumbhojkar, because according to the syllabus point and all, see your syllabus and computer engineering syllabus is same, 100% same, but the paper will be not same, huh? So you should remember these things. ऐसा नहीं कि फॉर्म्स का ही पेपर बैठ के सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है। आप आईटी और फॉर्म्स के सिलेबस सेम है, लेकिन पेपर दोनों के डिफरेंट आएंगे, क्योंकि दोनों के पेपर सेटर डिफरेंट हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, कब होगा आईआईटी? आईआईटी वे यू विल गेट the news about the IIT, or you will get the notice about the IIT must be after in the last week of Feb, or in the first week of March, not usse pehle, because from 27th our semester is started, so at least 1.5 month it required. So you can consider the IIT must be after 10 or 12 मार्च, 10 से 12 मार्च के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, because the syllabus we should have to convert complete 40%. Now moving ahead with the next part. Hope the screen is visible to all. Now something it is written on a whiteboard. You can see that, because I already mentioned that I will start with the module number 2, that is a complex integration. Complex integration. Now, when I say that is a complex integration, as already you people aware about, that is a what is a complex number, what is a complex number, and what is a complex variable. Why I'm saying this part, because complex number, complex variable, ये चीज आप पढ़ चुके हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो पता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। अगर ऐसा होगा तो फिर it will be a very difficult part for me as well as you people. Okay, now as I told, that is we'll go ahead with the complex integration. Complex integration. Now few things are written, that is the application of complex integrations. If you see, that is few application of complex integrations, that is one by one, it is two part, it is written. So one part is here. So one by one we can see, that is, if I see that first part is this part, here are a few examples, that is where we have to use the complex integration concept, because it is not any tool or anything. So here are few examples: space transformation, transportation systems, international space stations, aircraft carrier. These are huge systems. When I say that is a system, because if you aware about that is a, if I say a system means what? When I say that is a government का ये system पे problem है, और college के ये system में problem है. So system is not only one thing. या system ऐसा नहीं होता है कि किसी एक चीज से बना होता है. System is always made by several things or various other tools combine and make one system, like your operating systems, like your mobile system, mobile operating systems, like your AC's functional system, or any part of systems. When I say a system means it is not an individual things. System means a system is made up of several things. So when I say a system, so according to mathematics point of view, a system means integration.
So you should careful about that because you are a technical student. You are a technical students. आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप एक टेक्निकल स्टूडेंट्स हो. So you should remember these things in your day to day life as well as in your, that is a technical life, or we can say that is a corporate life. While after finishing the engineering, you will go for a business or anything, you should remember that is a system. If I say a college system, college ऐसा नहीं है कि only Patil sir is going to run a college, or only I going to teach a mathematics, or only HOD is going to take care of all the stuff. No way. It is a made of a various things. If I say IT department, so IT department में से अगर maths को आप side में कर दोगे, it will not complete it. Right, it will be lag somewhere. If I say that is a IT department, so IT department belongs to labs, IT department belongs to their laboratory, library books, IT department belongs to their faculties, IT department belongs to their principal, everything's classroom, etc., etc. So when they all the stuffs, or when all the things are combined, it makes a system, or it made one system. एक system उसको create करते हैं. So you should remember that when I say system, it means it is an integration. So these are huge systems that comprise the respective subsystems. Each subsystems got promoted to a system in a smaller circle, or we can say that is, as I mentioned, that is an integration or systems. Engineering character is to make group of specialists, testing, manufacturing, to work harmoniously through open communications, discussion, testing, verification, etc. All these have to be conducted within budget and schedule for fixed pricing contracts. In the first two cited example, NASA is the main integration agency. If you remember, that is NASA is obviously main uh, integration agency because it is not alone. It always combine various things. Analogous to this, how to federal and state government to work. So if the later statement is not belongs to complex integration, but when I say that is a complex, when I say complex and integration, so we have to combine many different things. It's not like a agar, when I say that is your college is a Gujarati linguistic minority. I'm just giving a day-to-day life example of integrations. Linguistic minority. So ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज में 100% only Gujarati minority people are going to study. No way. It is a 51. Might be the 51% crowd is Gujarati, but the remaining 49% crowd will be other than Gujarati or other than this thing. So you should remember that is when I say that is an integration. So integration, so you should remember about that is the integration. Now the second one thing it is returns, no doubt that the complex analysis is a tremendously useful with plenty of application in engineering and physics. Complex analysis is a tremendous useful with plenty of application in engineering and physics. Common raw application of complex analysis includes evaluation of ordinary and partial differential equation, fluid dynamics, AC circuit, quantum mechanics, electromagnetism, and acoustics via conformal mapping. Dispersion relations in photonics via Cramer-Kron relation, or other than this part, when you will enter in a seventh semester or eighth semester, that time you will learn that is a DTSP, that is a discrete time signal processing subject. During that subject, you will understand what exactly work a complex integration is going to work.
So Z transform and indeed all transform techniques which gives rise to signal processing and control theory or control systems always utilize a complex, because complex, when I say that is a complex integration or integration is completely, that is a summation part, but it have a something range, वो उसमें range होता है, he have a some little bit of range. Okay, so at particular range, when I say that is a -1 to +1, तो एक particular limiting area create हो जाता है, उसके बीच में ही जो भी calculation होता है वो हम calculation करते हैं. And it is not like a simple a straight line or a triangular or a circular things. It might be a rigid body concept. मतलब वो irregular shape हो सकता है, कैसा भी structure हो सकता है. So complex integration, these are the applications of complex integration. Now moving ahead with the next part. So how was your examination and all? Okay, Akash Pandey, you have something doubt? You raise your hand. Sorry, sir. Okay. No, I thought you have a little bit of doubt also, so no worries. If anyone having any doubts, how's your examination and all? कैसा हुआ आप लोग का एग्जाम? कैसा गया पेपर वगैरह? इजी ही था? अभी तो कोई किसी को कोई बैकलॉग केटी तो नहीं बचा है ना? सेम 1 सेम 2 सर इजी था बट बहुत लेंदी था सर. लेंदी था. So your time management is, I can say that is a time management was not sufficient. So must time management always required. So शायद प्रैक्टिस एंड ऑल के लिए वजह से आपको ऐसा लगा, बिकॉज आई व्हेन आई सॉ पेपर, ऐसा नहीं कि एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ आई कैन से दैट इज इफ जो आपका एमसीक्यू पार्ट था वो लेंदी था, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इन 1 hour द 40 marks मीन्स 20 क्वेश्चंस, उसमें भी मैथमेटिकल रिलेटेड अगर डेफिनेशंस या थ्योरेटिकल नहीं है और उसको सॉल्व करना है, देन इट माइट बी अ डिफिकल्ट टास्क. बट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था 80 मिनट्स का, 2 hours का, सॉरी 2 hours का बोल रहा हूँ, 80 मिनट्स का, वो मेरे हिसाब से नहीं उतना लेंदी रहा होगा. बट फिर भी आप लोग को तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो फिर भी लेंदी था. आदित्य पाटिल, एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया सर. अच्छा गया. हाँ सर. बैकलॉग अभी कितना बचा है? नहीं सर, एक भी नहीं. ओके, वेरी गुड. नाउ फ्रेश, एकदम टेंशन फ्री. हाँ सर. ओके. आयुष, हाँ सर. कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया. बैकलॉग कुछ है? नहीं. पक्का? हाँ. वेरी गुड. एनीवन हैविंग एनी बैकलॉग टिल नाउ? अभी भी किसी का कुछ बैकलॉग बचा है? अभी मत बचाना, अभी तो एंड कर देना, बिकॉज इतना अच्छा लॉटरी कभी नहीं मिलेगा लाइफ में. एमसीक्यू 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 बेस्ड. एनीवे, विल मूव अहेड विथ योर सिलेबस. आज ट्यूटोरियल था लेकिन now moving ahead with the evaluation of a line integral.
this part is also known as a line integral. Now see, when I say z means x plus iy. Z means x plus iy. If I am going to differentiate this part, so dz is equal to dx plus I dy. So if f of z is equal to, if f of z is equal to u plus iv in a complex variable, if you remember, if f of z is equal to u plus iv, then that is a complex integration f of z into dz, which is equal to complex integration u plus iv into dx plus I dy. एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, u प्लस आई वी. डी जेड इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स प्लस आई डी वाई. So while simplifying this part, you will get that is a complex integration f of z into dz, which is equal to complex integration. We have to multiply with the real part and imaginary part. So u dx minus, I'm just multiplying directly, u dx, I into I will becomes I square, that is minus 1, and v dy. This part will becomes real part plus I integral complex integration v dx. You can see that is I into v dx, so v dx, and plus u into I dy, that is u dy. So this is, we can say that is a evaluation of a line integral. So this is known as a evaluation of line integral or complex integral. So this is a evaluation. So यहाँ पे जब भी integration आप पढ़ोगे in this chapter, so you should remember that is you are going to integrate z and z equal to x plus iy. So dx must be dx plus I dy. ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, अदरवाइज डायरेक्ट उठा के इंटीग्रेशन करोगे कभी कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, ना वो राइट होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू learn a complex integration. So complex, when I say that is a complex, you should remember that is z is equal to x plus iy. Now one thing, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा. Of this x axis, y axis. Yes, Amay? You raise your hand. Amay Desai. Okay. Yes, sir. Okay.
Now see, this is x axis and y axis. X axis and y axis. अगर मैं एक पॉइंट आपको बोलूंगा, फॉर एग्जांपल, if I say point 2 plus 3i, just remember this. This means x plus iy से आप इसको कंपेयर करोगे. This means x is equal to आपको x और y जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आप हमेशा याद रखो y एक्सिस मीन्स आई वाई रहेगा, तो 2 and 3 होगा ये चीज़ आप अच्छी तरह से माइंड में फिक्स रखोगे. तो क्योंकि हमको यहाँ पे पॉइंट्स इस तरह से दिए जाएंगे, वैल्यूज इस तरह से रहेगा, तो x is equal to 2 and y is equal to 3. So because it is a complex number or complex thing, so x plus iy or a plus iy ib you should remember. Now अब जैसे मैं एक चीज आपके सामने बोल रहा हूं, when I say z equal to minus I to z equal to plus I, z equal to minus I to plus I. अब माइनस I मतलब कितना हो गया, -1. minus I means -1, and when I say z equal to plus I means z equal to 1. So we should see, ये तो x एक्सिस है आपका, यहाँ पे आपने देखा होगा पॉजिटिव इस साइड रहता है, नेगेटिव इस साइड रहता है, इधर एक पॉजिटिव रहता है और इधर यहाँ पे नेगेटिव रहता है. तो z इक्वल टू माइनस आई मतलब ये y का वैल्यू है. y का वैल्यू क्या है, -1. सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग हियर इट इज अ -1, और यहाँ पे कंसिडर करता हूँ +1. तो जो ये डायरेक्शन होगा वो समथिंग ऐसा होगा. Means the direction will be like this. This is, we can say that is a z equal to -i2 plus I. अगर यही i2 -i बोलता तो डायरेक्शन खाली चेंज हो जाता आपका. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, बिकॉज z इज इक्वल टू आपका क्या होता है, x प्लस आई वाई. इसको सीधा कंपेयर कर देने का अगर डाउट है. यहाँ पे x का कुछ दिया है नहीं, तो 0 माइनस आई वाई हो जाएगा. कंपेयर कर लो, सॉरी i1 i होगा 0 माइनस आई. इधर कंपैरिजन आप करोगे मतलब 1 तो यहाँ पे रहेगा ही, कंपैरिजन करोगे आपको मिलेगा y इक्वल टू -1. सिमिलरली इधर भी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 प्लस आई और 1 हो गया. कंपेयर करोगे y इक्वल टू आपको मिलेगा 1. सो दिस थिंग्स यू विल गेट -1 और +1 आपको मिल जाएगा. So you should remember these things. अभी यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए, हम लोग ये तो देख लिए ये पार्ट. अभी हमको इस पार्ट को, इवैल्यूएशन को एंगल में भी देखने आना चाहिए और एंगल में भी पता होना चाहिए. So as I mentioned, that is now see, when I say z, z means x plus iy.
ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसको हम पोलार में कन्वर्ट करेंगे तो z इक्वल टू क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर r इंटू ई रेस टू आई थीटा। इफ यू रिमेंबर आर स्क्वायर हमारा क्या होता था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, z इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा। ये मैंने एक कंडीशन के लिए बताया। अगर मॉड ऑफ z इक्वल टू हमको 1 दिया है तो r कितना हो जाएगा, खुद ब खुद 1 हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या बचेगा, ई रेस टू आई थीटा। तो यहाँ पे dz क्या होगा आपका, dz बाई डी थीटा जिसको कह सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो dz बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, i इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो dz इज इक्वल टू आपका क्या होगा, i इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा, एंड दिस इज योर फाइनल पार्ट। जैसे वहाँ पे dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई था, वैसे यहाँ पे dz इज इक्वल टू i इंटू ई रेस टू आई थीटा। यहाँ पे z इक्वल टू क्या था, x प्लस आई वाई, यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, r इंटू ई रेस टू आई थीटा। अब ये मॉड्यूलस ऑफ z के ऊपर, कंडीशनल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नहीं दिया है इसका मतलब 1 दिया है। अगर आपको 2 दिया है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, so you should go with the mod of z equal to or r equal to 2. So the radius is a very important part here. अब यहाँ पे जैसे इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो x और y है, यहाँ पे देखोगे तो थीटा है। तो थीटा का लिमिट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल था, z इक्वल टू माइनस आई टू z इक्वल टू प्लस आई। मैंने ऐसा समथिंग कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने रखा था, z इक्वल टू माइनस आई टू z इक्वल टू प्लस आई। ये थीटा में चले जाता है। अब थीटा का यहाँ पे रेंज अगर देखोगे तो ये क्या है, ये आपका क्या होता है 0 टू 90, ये 92 क्या होता है 180 होता है, ये क्या होता है 182, दैट इज 3 पाई बाय 2। तो आपका लिमिट पॉइंट यहाँ पे क्या होएगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो थीटा का आपका लिमिट पॉइंट यहाँ पे क्या होएगा, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आपका लिमिट पॉइंट होगा। यही अगर उल्टा होता, आपका z इक्वल टू आई टू माइनस आई, तो लिमिट पॉइंट भी आपका चेंज हो जाता, ऐसा जाता पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे दिक्कत होगा। 2 ही पार्ट है इसमें, 2 ही टाइप है, एक कार्टेशियन है, एक पोलार है। एक 100% 5 मार्क्स के लिए पूछता है आपको एग्जामिनेशन में, बट अभी सिलेबस आपका छोटा किया है, मतलब कट शॉर्ट किया है, तो इसको आपको वेटेज जो है ये 12 मार्क्स के वेटेज है। इस पार्ट को 12 मार्क्स का वेटेज है, नहीं तो पहले सिर्फ 5 मार्क्स का था, क्योंकि सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ कॉची ऑफ रेसिड्यूज भी पूछा जाता था, बट एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेसिड्यूज सेल्फ लर्निंग हो गया, इसके वजह से इसका मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है। दैट इज फ्रॉम दिस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू द मार्क्स इज 12 मार्क्स, नॉट 5 मार्क्स। सो यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या हो सकता है मिनिमाइज, क्योंकि पूरे मॉड्यूल बेसिस पे आता है, बहुत कम से कम हुआ तो 8 मार्क्स के लिए तो आपको पूछा ही जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 2 पार्ट है, दोनों ही पार्ट आपको खाली ध्यान में रखना है। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे और
जो लिमिट पॉइंट आपको दिया जा रहा है उसके बेसिस पे। anyone having any doubts regarding whatever I taught today? मैंने आज तो कुछ लिया नहीं है ज़्यादा। विल मीट ऑन सैटरडे। हम जो हमारा ट्यूटोरियल का टाइमिंग है वो मैं सैटरडे को डालूंगा, बाद में हम उसको स्वैप कर लेंगे, और जो ये टाइमिंग है इसमें हम लोग लेक्चर लेंगे। सो अगेन एवरी सैटरडे, नॉट नाउ, आफ्टर 2 वीक, एवरी सैटरडे विल गो अहेड विद द ट्यूटोरियल और एज वेल एज द मिनी प्रोजेक्ट, जो भी रहेगा उस हिसाब से हम उसको यूटिलाइज करेंगे। बट वीक डेज में हम लेक्चर्स लेंगे, एंड वीक एंड जो लाइक सैटरडे है वहाँ पे जो हमारा सैटरडे का अगर आप देखोगे, मैंने टाइमिंग भी अपना गूगल क्लासरूम में पुट कर दिया है। दैट इज़ सैटरडे 9 to 10 वी हैव। सो वो 9 to 10 जो है वो ट्यूटोरियल के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। रिमेनिंग 11:30 to 12:30 मंडे लेक्चर्स, ट्यूसडे 11:30 to 12:30 लेक्चर्स, थर्सडे टू जो आज है 10:15 to 11:15 लेक्चर्स, एंड सैटरडे को ट्यूटोरियल रहेगा। लेकिन पहले 2 वीक सभी लेक्चर्स रहेंगे। नॉट, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस वीक, आई एम कंसिडरिंग इसके बाद वाला जो 2 वीक आएगा वो 2 वीक तक लेक्चर्स रहेंगे, बिकॉज कुछ हमारे पास होना चाहिए ट्यूटोरियल लेने के लिए। नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पार्ट? अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछो इस पार्ट में, और हम अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज नेक्स्ट 5-7 मिनट 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो उसमें सम सॉल्व करने जाऊंगा तो माइट बी विल बी अ डिफिकल्ट। जस्ट वेट। Don't left, huh? Just wait for 2-3 minutes.
Okay, don't left. I'm going to take the attendance. So just wait. Okay, okay, thank you. See you on Saturday.